Hello friends, Assalamu alaikum. I am Baliullah Kalwar with Ishtiyaq Ahmed. Today we will discuss important topic of power electronics and the supervision of Dr. Qurban Ali Shah. So our topic is SCR body protection. SCR body protection. First of all, we should know what is SCR. SCR protection and efficient operation. SCR is designed to operate within the specific PY rating, so they must be protected against abnormal operating conditions. So various operations schemes are available. Satisfactory operation SCR means SCR अहिड़ी डिवाइस आहे जेको प्रोटेक्ट या डिज़ाइन कराई वई आहे PI रेटिंग जे हिसाब सां, त जहिड़े मीन्स पंहिंजी ओवर वोल्टेज थी वेंदी आहे या ओवर करंट थी वेंदी आहे, उन्हनि खे प्रोटेक्ट करण लाइ पंहिंजी डिफरेंट टाइप्स आहिनि। जीअं पंहिंजो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन थी वियो, ओवर करंट प्रोटेक्शन थी वियो, DI/dt प्रोटेक्शन थी वियो, DV/dt प्रोटेक्शन थी वियो या थर्मल प्रोटेक्शन थी वियो। जीअं पंहिंजो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन थी वियो, ओवर करंट प्रोटेक्शन थी वियो, DI/dt प्रोटेक्शन थी वियो, DV/dt प्रोटेक्शन थी वियो या थर्मल प्रोटेक्शन थी वियो। DV/dt protection. DV/dt is a rate of change of voltage with respect to time. Rate of change of voltage means इहो आहे, उन जो मतिलबु इहो आहे त रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज जो त टाइम जे हिसाब सां वोल्टेज में घटि वधि थियणु, उन में तब्दीली थियणु। अगरि टाइम वधी वञे त वोल्टेज बि वधी वञे या घटिजी वञे, या टाइम माना घटिजी वञे त वोल्टेज में का अहिड़ी चेंजिंग अचे या वधि अचे या घटि अचे, उनखे पाण वोल्टेज जी चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चवंदा आहियूं। हायर वैल्यू ऑफ DV/dt में रिज़ल्ट इन टू द फॉल्स टर्न ऑन ऑफ SCR। हायर वैल्यू ऑफ DT जो जेको रिज़ल्ट पाण निकिरंदो या जेको चइजे त पाण एज़ इहो वर्क कंदो आहे हिकु स्विच वांगुरु, जेको हिकु फॉल्स टर्न ऑन थी वेंदो या उहो SCR खे डैमेज करे सघे थो, जेको हायर DV/dt जेको हूंदो आहे। इहो हायर DV/dt यूज़ इन लाइ कयो वेंदो आहे त मतिलबु त SCR खे प्रोटेक्ट करे। To provide the DV/dt protection are connected snowball circuit। जंहिंमहिल पाण DV/dt प्रोटेक्शन खे पाण हुन सां कनेक्ट कंदा आहियूं त हिन में इहो लिखियलु आहे त उनखे स्नोबॉल सर्किट कनेक्ट कंदा आहियूं टू प्रोटेक्ट द SCR, टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। पाण उनखे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करण लाइ पाण DV/dt प्रोटेक्शन यूज़ कंदा आहियूं। Capacitor is connected to bypass the high DV/dt through the SCR। पाण जंहिंमहिल उन सां सर्किट पाण ॾिसंदा SCR जो, जेको SCR सां पाण सां पैरेलल में हिकु RS रजिस्टर प्लस उन सां रजिस्टर सां सीरीज़ में हिकु कैपेसिटर कनेक्टेड हूंदा, जेको DV/dt जेको हाई पास फिल्टर हूंदा, जेको SCR खे प्रोटेक्ट करण लाइ यूज़ कयो वेंदो आहे, जेको पाण खे हाई माना DV/dt पास थ्रू कंदो आहे टू SCR। SCR is connected to decrease the discharge current of capacitor through SCR। रजिस्टर जेको हूंदा उहो कनेक्ट कयो हूंदा, डिक्रीज़ कंदो आहे डिस्चार्जिंग ऑफ करंट खे टू द कैपेसिटर थ्रू द कैपेसिटर। दिस RC सीरीज़ क्रॉस SCR इज़ कॉल्ड स्नोबॉल सर्किट। पाण जेको हिन खे R ऐं C पाण सां कनेक्ट हूंदो आहे हिन सां SCR सां, त उनखे पाण स्नोबॉल सर्किट चवंदा आहियूं। DI/dt protection। DI/dt protection is the rate of change of current in device. When SCR is in forward bias and it's on by the gate signal, then there will be a flow of anode current. The anode current requires some time to spread inside device. DI/dt is the greater spread velocity of charge, then it create hot spot and that may be damage SCR.
So to maintain the di by dt through SCR, we carried it inductance in series to the SCR. Change with respect to time. In SCR, an inductor is connected with series when supply Vs equal to L di by dt. L is equal to such that L is equal to Vs equal to upon di by dt. L is greater than Vs upon di by dt. Di by dt means change with current change with respect to time. जॾहिं करंट चेंज थिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उनखे पाण डी आई बाई डी टी चवंदा आहियूं. ठीकु आहे. पाण हिन में इंडक्टर यूज़ कंदा आहियूं छाकाणि त इंडक्टर यकदमि सडन माना चेंज न ॾींदो आहे करंट में. इहो प्रोटेक्ट कंदो ए सी आर खे. ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस इंक्लूडिंग सर्किट ब्रेकर्स एंड फ्यूज़. Overcurrent protection device mean to protect against the potentially dangerous effects of the overcurrent, such as an overload current or short circuit current, which creates a faulty current. In an SCR, due to overcurrent, the junction temperature exceeds the rated value and the device get damaged. हिन में इहो हूंदो आहे त पंहिंजो करंट ओवर करंट में जंक्शन ते जेकी सप्लाई करंट हूंदी सप्लाई उहा एक्सीड करे वेंदी ऐं डिवाइस डैमेज थी वेंदी. वाट इज़ ओवर करंट? सप्लाई करंट ग्रेटर हुजे रेटेड करंट खां त उनखे पाण चवंदा आहियूं ओवर करंट. जंहिं महिल पंहिंजे सप्लाई करंट रेटेड करंट खां वधीक हूंदो त उनजे करे फ्यूज़ हीटअप थी वेंदो. उहो जेको फ्यूज़ हूंदो आहे पंहिंजो उहो एस सी आर खे प्रोटेक्ट करण लाइ यूज़ कयो वेंदो आहे. जंहिं महिल पाण सप्लाई करंट ॾींदासीं त उन में जेके फ्यूज़ लॻल हूंदो आहे त उहो उनखे जंहिं महिल हीटअप थी वेंदो आहे त उहो ब्रेक थी वेंदो आहे ऐं सप्लाई कनेक्शन टुटी वेंदो आहे. उनजे करे उहो प्रोटेक्ट कंदो आहे एस सी आर खे. ओवर करंट प्रोटेक्शन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द SCR. We need to protect the SCR against the overcurrent. As we know, high pass current through the SCR, it will cause high heat generation. Because we know the practical switch have some equivalent resistance, when high current will flow will happen the high power losses. Due to that high temperature, heat will generate, more heat will generate. Due to that SCR will get damaged permanently. To avoid that permanent damage to SCR, how to protect the SCR against the overcurrent? We are using the fast acting current limiting fuse, FACLF, which stands for the fast acting current limiting fuse, where we need to connect it. We need to connect it in series with SCR because it overcurrent when overcurrent is connected, because it protects from overcurrent. When we connect it in series, current flow through the fuse and the current will protect. So generally, what is this? This is the simple circuit. This fuse connected with the SCR in series. This fuse has some current rating. This protect the SCR when current flow through the fuse. This fuse will heat up and work like an open switch. In this way, the fuse will protect the SCR against the overcurrent. Over voltage protection. First one, why is required? Due to over voltage triggering method. The very first method is triggering method.
we do we will apply the high forward voltage across the SCR. Due to the breakdown of the depletion across the junction will take place. So over voltage protection is required. If we not protect the SCR against the over voltage, what will happen? SCR may triggered. We can say falsely triggering mean we are not interested in turn on or off of the SCR at the instant and SCR may trigger. To avoid the falsely triggering, we need to protect against the SCR, the over voltage. Order to the over voltage, we are going to use the varactor. Varactor stands for variable resistor. We represented the varactor with the symbol. This is a normal voltage, and this is also normal voltage in the negative direction. Variable resistor during the normal working voltage resistance offered by the varactor is indefinite. Current flow through the varactor will be zero. हाणे हिन तव्हां ग्राफ में ॾिसी सघो था हिकु जेको वेरेक्टर आहे हीउ वेरेक्टर जो ग्राफ आहे. वेरेक्टर जनरली यूज़ थींदो आहे टू प्रोटेक्ट द SCR. मतिलबु SCR खे प्रोटेक्ट करण लाइ यूज़ थींदो आहे. जेको अगरि पाण SCR खे सप्लाई जे महिल करंट ॾींदा आहियूं, पाण जंहिं सप्लाई करंट ॾींदा आहियूं पाण SCR खे, त उन में जंहिं महिल सप्लाई करंट रेटेड करंट खां वधी वेंदो आहे, उनजे करे जेकी उन में हीट पैदा थींदी आहे या हीट प्रोड्यूस थींदी आहे, त उन हीट प्रोड्यूस या सप्लाई करंट जे ओवर रेटेड करंट खां बचाइण जे लाइ पाण वेरेक्टर रखंदा आहियूं. वेरेक्टर जनरली हिन सां जेको आहे SCR सां पैरेलल में कनेक्ट हूंदा आहे सर्किट में. हिन जी जंहिं महिल पाण करंट वधंदा, वेरेक्टर हिकु नॉन लीनियर रेजिस्टर आहे जेको यूज़ कयो वेंदो आहे टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट. मतिलबु रेजिस्टर उहो या वेरेक्टर जो कमु हिकु ई आहे, ॿई जेको आहे फ्लो ऑफ करंट खे रोकींदा नी. अगरि पाण हिन में VI करेक्टरिस्टिक्स ॾिसूं, हिन VI करेक्टरिस्टिक्स में इहो आहे त जंहिं महिल बि पाण हिन जी रेजिस्टेंस वधीक हूंदी त उनजी माना कर्व वधी वेंदो. वोल्टेज जेको आहे घटि हूंदो त रेजिस्टेंस वधि हूंदी, अगरि वोल्टेज वधि हूंदो त रेजिस्टेंस घटि हूंदी. उन करे हिन ते कर्व ते वॾो फ़र्क़ु पवंदो. अगरि वोल्टेज वधीक अप्लाई कंदासीं त उहो उनजो ग्राफ बि वधी वेंदो. अगरि वोल्टेज माना टाइम जे हिसाब सां. वोल्टेज प्रोटेक्शन. As the voltage protection increases above the normal working above the rated voltage, then what will happen? Resistance varactor falls suddenly and the current flow through the varactor increases suddenly. So we check the VI curve and we are going to draw the both curve. First one is the current versus voltage, other one is voltage versus resistance. During the normal working voltage, resistance offered is very high, so it is infinite. So as the voltage become abnormal, yes, resistance of the varactor falls suddenly. Similarly, same here. Also during the normal working voltage, is varactor is infinity, so it coming from the infinity as varactor as voltage increases above the rated voltage or the normal working voltage. The resistance of a varactor decreases, so very low value or decreases suddenly. So this R versus voltage characteristics of the varactor. Similarly, from we draw the current, yes, here resistance is infinity, what is current will be zero.
so it is the increasing from 0. Similarly in this case, so increasing power consumption of the vector during the abnormal working voltage is 0, because the current is 0 and the resistance is high, I square R. If increasing above the rated voltage or the normal working voltage at that time, definitely the current flow through the vector increases. Increases resistance of the vector decreases, where the resistance of the vector decreases. What was the additional current in the SCR? The current bypass through the vector. Ultimately, this vector value is very low. If the resistance value is low, what will happen? Definitely voltage across the vector will be low. As SCR is connected in parallel, so voltage across the SCR during the abnormal conditions is low. In this way, the vector protects the SCR against the abnormal conditions. In this way, SCR protects in abnormal conditions against the overvoltage. This is current and flow through the vector, not from SCR. This voltage is resistive curve. This is current. This voltage is resistive curve. This current is resistance curve from the vector. Vector is a variable resistor which offers the high resistance during the normal working voltage. But if the voltage across the device increases to a high value, that time the resistance of the vector decreases suddenly, decreases sharply, where we need to connect the vector. Generally, vector is connected in parallel with the SCR. It is to protect SCR. It protects from the over voltage during the normal working voltage. Current flow through the vector will be 0 during the normal operation or the normal working voltage. The resistance offered by the vector is 0. Power consumption of the vector during the abnormal working voltage is 0, because the current is 0 and the resistance is high, I square R. If increasing above the rated voltage or the normal working voltage at that time, definitely the current flow through the vector increases. Increases resistance of the vector decreases, where the resistance of the vector decreases. What was the additional current in the SCR? The current bypass through the vector. Ultimately, this vector value is very low. If the resistance value is low, what will happen? Definitely voltage across the vector will be low. As SCR is connected in parallel, so voltage across the SCR during the abnormal conditions is low. In this way, the vector protects the SCR against the abnormal conditions. In this way, SCR protects in abnormal conditions against the over voltage. Hello, Assalamu alaikum. My name is Ishaq Ali and my roll number is L-20EL08. As earlier Waliullah Kalwar told you about the presentation and the topic of our presentation. So the topic of our presentation is SCR body protection. So I am here to tell you applications of SCR. So the number one is it is used for power control. ही जेको आहे the power control जेकर इस्तेमालु कयो वेंदो आहे. Second point is it is used for switching. ही जेको आहे switching लाइ यूज़ कयो वेंदो आहे. Third point is
इट इज़ यूज़ फॉर DC सर्किट ब्रेकर्स। ही DC सर्किट ब्रेकर्स में यूज़ कयो वेंदो आहे ऐं उन सां गॾु पल्स सर्किट्स उन में भी यूज़ थींदो आहे। नंबर 4 पॉइंट इज़ बैटरी चार्जिंग रेगुलेटर ज़ीरो वोल्टेज स्विचिंग। त ही बैटरी जे चार्जिंग रेगुलेटर्स में इस्तेमालु थींदो आहे ऐं जो ज़ीरो वोल्टेज स्विचिंग आहिनि ऐं पावर कंट्रोल विथ सॉलिड रिले, मतिलबु इन जो जेको पावर कंट्रोल आहे उहो सॉलिड रिले में आहे, जो जेको रिले आहे उहो सॉलिड में आहे। And now there are some advantages of SCR body protection. Number 1 is it switches large levels of current using only a small current control. मतलब ये जेको आहे लार्ज लेवल करंट खे स्मॉल लेवल करंट में आणींदो आहे। हा, इट स्विच हाई वोल्टेज, इहो जेको आहे त हाई वोल्टेज खे स्विच कंदो आहे। इट इज़ एबल टू कंट्रोल AC पावर, SCR जेको आहे AC पावर खे कंट्रोल कंदो आहे। इट इज़ मच स्मॉलर इन साइज़ कंपेयर टू ट्रांसफार्मर। ही SCR जेको आहे उहो ट्रांसफार्मर जे कंपेरिजन में तमामु घणो नंढो आहे। ट्रांसफार्मर थोरो वॾो आहे ऐं हे तमामु नंढो आहे। कंट्रोल AC डिवाइस, सिंपल टू कंट्रोल, टर्न ऑन गेन इज़ वेरी हाई। ये जेको आहे त सिंपली कंट्रोल कंदो आहे। टर्न ऑन गेन इज़ वेरी हाई, मतिलबु जेको टर्न ऑन जो गेन आहे उहो तमामु हाई हूंदो अथसि ऐं हीउ जेको आहे लो कॉस्ट आहे, मतिलबु सस्तो आहे, हिन जो कॉस्ट घटि आहे। एंड नाउ देयर आर रिज़ल्ट्स एंड कंक्लूजन्स। सो हैंस द SCR इज़ बेस्ट फॉर स्विचिंग। SCR जेको आहे उहो स्विचिंग लाइ तमामु बहितरीनु आहे। Above the characteristics make thyristor extremely useful in control application। जेके कैरेक्टरिस्टिक्स आहिनि उहे मतिलबु थैरिस्टर खे यूज़फुल करार ॾींदा आहिनि कंट्रोल एप्लीकेशन्स में। एंड कंटिन्यूड, कंपेयर टू मैकेनिकल स्विच, अ थैरिस्टर हैज़ वेरी लॉन्ग सर्विस लाइफ। मैकेनिकल स्विच सां अगरि थैरिस्टर खे असां कंपेयर कयूं त थैरिस्टर जो जेको हयाती आहे, जेको मतिलबु उनजो वर्किंग जेको हूंदो आहे त उहो पंहिंजो मैकेनिकल स्विच खां ज़्यादा आहे, मतिलबु थैरिस्टर जो लाइफ मैकेनिकल स्विच खां ज़्यादा आहे। एंड वेरी फास्ट टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम, ऐं इन्ही खे थैरिस्टर खे टर्न ऑन ऐं टर्न ऑफ जल्दी थी वेंदो आहे। ॿिए ते असां ॾिसूं जेको असांजो पंहिंजो मैकेनिकल स्विच आहे त उहो टर्न ऑन ऐं टर्न ऑफ में बि तमामु घणो टाइम वठंदो आहे ऐं थैरिस्टर जल्दी में टर्न ऑफ बि थी वेंदो आहे ऐं टर्न ऑन बि थी वेंदो आहे। दीज डिवाइस वर्क एज क्रॉपर when the over voltage occurs and will divert energy away from circuit or device that is being protected। ये एक अहिड़ो डिवाइस आहे, इन जो कमु इहे आहे त मतिलबु जेकॾहिं वोल्टेज हद खां वधी थो वञे त जेको एनर्जी आहे उन खे सर्किट खे डिस्कनेक्ट करे छॾींदो आहे, सर्किट खे सार खां बचाईंदो आहे, उन जो प्रोटेक्शन कंदो आहे। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन।